So speaking of values, the young generation is very low on it. So they are dealing with a lot of, but of course, it is hard for them because they are in the social media zamana. They don't know the essence of a lot of things, which is not their fault either. So the problems that come to them is कि they have no focus, no clarity, procrastination बहुत ज़्यादा है. Even if they want to कि I want to do this, I need to do this, मुझे ये habits build up करनी है, but they procrastinate a lot. तो ये जो issues हैं, इन्हें कैसे आप sort कर सकते हैं? What suggestion you can give to me, especially to the Gen Zs and Alpha generation? So the first thing is you should be very good at taking help. Find someone who is already doing what you want to do. जो भी आप बनना चाहते हो. If you want to be a millionaire, happy, successful person, find them either on LinkedIn. अब तो बहुत easy जमाना हो गया. You have such a easy access to all these people. Now ping them कि I am struggling with this. Can you please help me? I am this. So out of 199 times people will help you. Second thing is find a mentor. तो जो मैंने बोला है, even if you are able to reach 1 out of 100 and that person agrees to be your mentor, and even if you have to pay them something, अगर आपने उनको 10,000 या 20,000 भी पे किया ना, तो फर्स्ट यू शुड बी एबल टू हैव दैट स्पिरिट कि आई विल पे 10,000 बट मुझे रियल लाइफ स्किल सीखना. अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो कोई सा भी मेंटोर आ जाए वो कुछ भी नहीं कर सकता. सेकंड, जब यू शुड व्हेन यू आर पेइंग देम देन यू आस्क कि बी माय मेंटोर, गाइड मी. मेरे को एक सेशन ही ले लो आप. 10,000 जब आप दोगे ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली डू ऑल द थिंग्स, क्योंकि यू हैव पेड देम. आपने इतनी मेहनत से जो भी आपका पैसा जब आप दोगे, यू विल फील कि मैंने इतना हाई अमाउंट एक सिंगल मीटिंग के लिए पे किया है, आई नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स दैट दिस पर्सन टोल्ड मी. आपको फ्री में कितनी भी चीजें मिलेगी ना, यू विल कीप देम समवेयर और द अदर, यू विल नॉट वैल्यू इट. तो फाइंड अ मेंटर, have a meeting, so that single person is sufficient enough to guide you on the right path. That's the most important step. Yes, that is a key breakthrough actually. Earlier, you said that it's very easy to become a millionaire if you have the right mindset. So for the ordinary people जो usually dream भी नहीं कर पाते हैं कि like yes, we can reach that level. बहुत लोगों ने किया है. We know there are people out there, but still there is something that holds them back. So ऐसी क्या चीज है that can make an ordinary person a millionaire? Okay, so it's a very simple path. First you decide what's your goal. मुझे इतने पैसे हर महीने कमाने हैं. That's it. यही मेरा single pointed aim है. Now once you decide the amount, now you will think कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा कैसे. Now what you will do is every day आप 5 से 10 मिनट you will meditate and think about it कि ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ. तो आपके दिमाग में ऐसे अपने आप आइडियाज आएंगे जो आपको बताएंगे कि यू कैन डू दीज थिंग्स. अब आपको पास आइडियाज भी आ गए. नाउ थर्ड इज एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपके डायरी में हर आइडियाज बनना कुछ भी नहीं होगा. यू नीड टू डू द एक्शन स्टेप. योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क. तो इफ यू आर सराउंडेड बाय सच पीपल जिनसे आपको हाई एनर्जी, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जहां पे आप दे आर द रियल एक्शन टेकर्स, अब आप बोलेंगे कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे. फाइंड समवन. आई नो अ पर्सन जिन्होंने जैसे तैसे जुगत भिड़ा के ही रीच द पर्सन ही वांटेड टू मीट, एंड उन्होंने उनका स्केड्यूल देखा कि ये इस वक्त के करीब जिम जाते हैं, तो उन्होंने भी वो जिम ज्वाइन किया जस्ट टू मीट दैट पर्सन एंड टॉक टू हिम. So you will have to be resourceful and find the right network that will actually be able to help you grow. So these are the 4 simple things. If you will start following, you will reach wherever you want to reach. Okay, awesome. So आप ही के curriculum का एक part है MMP, I think if I'm not wrong, Millionaire Mindset Programming. Programming, correct. So tell me a little bit about it. So what we start with is, देखिए बहुत सारे लोगों को अगर मैं आपको बोलूंगा कि you are earning 1 CR per month, तो आपको यकीन ही नहीं होगा. You have not never thought कि मैं इतना earn भी. किसी से भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. When I first thought कि my hotel can do this much, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ. बट देन जब मैंने मेंटोर के कहे अनुसार मैंने वो पहले वो फिगर लिखा, सो आई केम रिवर्स. पहले मैंने वो फिगर लिखा, उसके बाद मैंने सोचा कि ओके दीज मेनी रूम्स आई हैव, इतना अगर मैंने पर रूम का चार्ज किया, देन आई विल बी एबल टू हिट दिस टारगेट विद दिस मच ऑक्यूपेंसी. दो चीज सॉर्ट.
नाउ आई थॉट कि मैं क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं इतना चार्ज कर सकूंगा, मैं और क्या क्या मेथड इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरे पास इतने लोग आएंगे, एंड देयर वाज अ पाथ राइट इन फ्रंट ऑफ मी. तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर माइंडसेट. फर्स्ट यू हैव टू थिंक कि मैं ये कर सकता हूँ, देन यू विल डू लाइक these affirmations which are specifically recorded, जिससे आपका मनी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाता है. You will do the same sort of visualization and meditation. So these are the things that I teach in my premium program, कि सबसे पहले first your energy level should be that high कि you will start attracting all those things, and then I will help you get the right network and everything, जिससे आपको you will be able to find the right connections. Okay. So this is basically what it takes to become rich and successful. Any other Yeah. pattern or any other techniques that you follow? So yeah, I have a whole list of 30 principles that millionaires follow. If you learn these 30 principles, no one can stop you. तो जिन्होंने उस 30 principles में से 13 14 भी अपना लिए अपनी लाइफ में, they have become millionaires. So this is what I teach in my workshop and in my premium programs. बट बेसिकली अगेन इट कम्स टू द सिंपल पॉइंट. फर्स्ट आप अपना गोल डिसाइड करो, जो बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा गोल हो. देन अगेन यू स्टार्ट वर्किंग. आप उसको ब्रेक डाउन करो कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगा कैसे, व्हाट ऑल थिंग्स आई विल रिक्वायर. थर्ड इज योर नेटवर्क. फोर्थ इज मेडिटेशन, शांति से सोचना, हाउ आई विल बी एबल टू अचीव दिस. अब And क्या then होता है, लोग सुबह से शाम तक दौड़ते ही रहते हैं. दैट लाइक बिजनेस नहीं चल रहा, कंपटीशन बहुत है, Hmm. नथिंग इज वर्किंग, दे कीप रनिंग मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग. अब जब मैं उनसे पूछता हूँ, डू यू मेडिटेट? नो. डू यू डू अफर्मेशंस? नो. डू यू हैव अ विजन बोर्ड? नो. बेसिक्स ही राइट नहीं है, फंडामेंटल्स ही नहीं है, तो हाउ यू विल बिल्ड ऑन इट? इट्स नॉट पॉसिबल. जब आपका विजन पहले बहुत ग्रेट होना चाहिए, वो विजन जैसे ही बन जाता है, आपने अगर मन में ठान लिया कि आई विल बी द बेस्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, लेते लेट्स टेक आपका शोरूम है कॉस्मेटिक्स का, एंड डिसाइड कि मैं अपने शहर का सबसे बढ़िया कॉस्मेटिक्स की शॉप चलाऊंगा, बेस्ट, एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एवरी सिंगल डे, कि नहीं मेरे को वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आई हैव टू बी बेस्ट, आई हैव टू गिव बेस्ट सर्विस, I have to take right feedback from all my clients. Automatically, you will start improving every single day. Yes. Okay. पर ऐसा भी होता है कि सपोज these are the things that happens, क्योंकि एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रिकी होती है, इट गेट्स वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर. सो एक ये भी होता है कि हाउ विल यू डील विद ऑल दीज थिंग्स, कि आप कर रहे हो सब कुछ, यू हैव द विजन बोर्ड, यू आर मेडिटेटिंग, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट फिर भी वो कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस ऐसी आ जाती है दैट यू आर नॉट एबल टू कोप अप और डील विद. तो इसके लिए व्हाट डू यू सजेस्ट? First is faith. Faith in God or universe or a higher power, कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, I have given my best, अब आगे आपके ऊपर है. रिजल्ट्स की मैंने परवाह नहीं की, बट यू हैव टू गिव. अब आपने यूनिवर्स से मांग लिया तो यूनिवर्स दे देगा. आप बोलेंगे यूनिवर्स से कि मैं तो बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा, यूनिवर्स विल से तथास्तु. यस, ट्रू. If you will say I will become the best and I will not stop until I reach my goal, universe will say tathastu. तो you will achieve it. जब नेगेटिव फेज में आप गुजर रहे हैं, तो देन दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट. जैसा मैंने बताया कि मेडिटेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, these things will keep you high energy even during your worst time. तो करेक्ट. कीप मेंटली प्रैक्टिसिंग इट. बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मोहम्मद अली थे. मोहम्मद अली को किसी कारण से, ही वाज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, उनको जेल हो गया. उनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था. एज सून एज ही गॉट आउट ऑफ द जेल, ही चैलेंज्ड. दोनों का रिंग में फाइट हुआ. 60 मिनट्स के अंडर अंडर में मोहम्मद अली ने उनको हरा दिया. अब मीडिया वॉज शॉक्ड. मीडिया उनके पास आके बोला, भाई साहब आप तो जेल में थे, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस किया नहीं आपने, आपने इस पर्सन को 60 सेकंड के अंदर में हरा कैसे दिया? नाउ व्हाट मोहम्मद अली सेड, आई हैव डिफीटेड हिम 1000 times here. So that's how he practiced. He kept rehearsing. In his mind itself, he was like, वो वैसे मुक्का मारेगा तो I have to give reply. यस. माइंड से ही उन्होंने इतनी 90-95% जंग जीत ली. So that's why we call यहाँ से, that's why I say कि first I work on mindset. यहाँ से जीत गए तो बाकी सब चीज यस. तो बहुत इजी हो जाएगी. Yeah, and this is actually something that many people, many sports persons follow.
Even Virat Kohli said a similar thing, that they visualize the scenarios a lot because it is neurological. कि scientific studies भी होती है कि if you are doing something or you are thinking about it very deeply or visualizing of doing something, same chemicals are released in our body. So the mind does not know the difference, and eventually it happens. So that's actually how visualization works, right? So yep, that's a pretty good suggestion, I would say. Now there's a book that you have written. You are an accomplished author as well. So how did that happen? Tell me a little about it. Okay, so like I was writing poems since I was in 8th class, and I have Oh, written like 200, 300 poems till date. So this is one thing that God has gifted me with. Ki I can write something immediately, and within 5 minutes I can write a poem. तो ये चीज तो था, but then I at certain duration I was writing a sad type of poems when I was very broken and I was, but during the same phase I started writing inspirational poems. Even I was broken, so I inspired myself and I started writing in a way कि जिससे मुझे खुद को मोटिवेशन मिलने लगा. Now out of all those poems I selected those inspirational ones, and right now I just write these sort of poems only. I have stopped with these sad and everything a long back. So first you need to remove yourself from negativity, any sort of negativity. बहुत सारे poets आपको मिलेंगे जो गम गम में ही दुनिया को भी गम पिलाते रहते हैं, खुद भी गम में. अच्छा है, ये भी एक फेज होता है जब आपको उस चीज की भी जरूरत होती है, yeah, and you feel really connected जब आप you are broken. That's yeah. that's completely all Embracing right. pain But then also I gives didn't meaningful wanted to, art. yeah, yeah, I didn't wanted to go into that thing. I couldn't resonate. I'm always so high energy and inspiring. So I started writing inspirational poetry. And then suddenly a competition came, and us competition mein I wrote 21 poems. I submitted, and then my book got published. So I did, hardly paid 2000, 2500. That's all I have paid to get my book published. It's nothing like I have paid 40, 50,000 to get my book published. And then second thing is there are many people right now who are saying I am a best selling author. They have found some tricks जिससे वो उस पर्टिकुलर दिन पे उनकी बुक बेस्ट सेलिंग पे जाती है, एंड दे स्टार्ट टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड दे से द वर्ल्ड की आई एम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर. Mm, बट देखिए, ग्लैमर एंड ग्लोरी में मत जाइए. एक्चुअली सी हाउ मेनी लाइव्स यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म. दैट्स व्हाट मैटर्स मोर. So I started gifting my poem, this book. So I had a PDF. And even one of my mentors, जिन्होंने कभी मुझे डायरेक्टली कोच नहीं किया है, but as I said, I listened from his YouTube videos what is his morning routine, and I started following. So he was in Canada. I sent a book from India to Canada just as a gesture of gratitude and gift कि आपसे मैंने इतना सीखा है. It costed me 3,300 rupees. That single, I have never spent that much on myself or anything in my life. I have never bought something, but I sent it to Canada because what I wanted was impact, not a best-selling tag. So this birthday, I gifted my books to lots and lots of people. Like I can't even remember how many people. The only thing I want is impact. Money I already have. Money I will earn anyway. But my poems were always a part of me that I wanted to inspire the world with. yes, So that goes to a legacy. yeah, Brilliant, amazing. Now coming to a very trending and curious topic that is a recent hit in the podcast as well, that modern relationships are making everything chaotic. So, what's your take on it? And you were married. You said that it also was a hindrance, and everyone faces some or the other kind of problems, whether it is relationship, marriage, or anything. So, आपका क्या experience था, and what would be your key learnings and suggestions to the again the Gen Z and Alpha generation specifically? correct. So this is absolutely in recent times we see a lot of these relationship issues. अब गलती जनरेशन की है ही नहीं. आपको कभी सिखाया ही नहीं गया हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स, हाउ द Exactly. अदर पर्सन थिंक्स, व्हाट इज साइकोलॉजी, हाउ यू कैन मोल्ड अ सिचुएशन इनटू अ वेरी बेटर वन. आपको सिखाया ही नहीं गया ना स्कूल्स में ना कॉलेज में. अब क्या होता है, यू आर इनटू वर्क बट घर पे आके क्लैशेस हो रहे हैं, तो ना आपका काम में मन लग रहा है, यू आर अर्निंग अ लॉट बट फुलफिलमेंट ही नहीं आ पा रहा. आपको लग रहा है ये क्या हो गया. बट what the solution is, find 5 top books on relationships, read them, implement them. जहां भी आपको कुछ भी
नहीं आता, टेक टॉप 5 बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अरीना ऑफ दैट जोनर, रीड इट, एक ही पढ़ लो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इनपुट। बट उतना एफर्ट भी नहीं डालोगे आप किसी हम्म, चीज को सॉल्व करने के लिए, तो फिर कैसे होगा? और इधर यू कैन गो टू रिलेशनशिप कोच। अब कोच के यहाँ क्या होता है, हमारे इंडिया में हमको क्या लगता है कि भाई कोई माइंडसेट कोच है, मतलब हमारे में कुछ ठीक नहीं है तो ये वो ठीक करने गया है। नो, द माइंडसेट कोच मीन्स जहां आप अभी हो बट यू वांट टू रीच सम नेक्स्ट लेवल, द कोच विल हेल्प यू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज हाउ यू नीड टू मैनेज। अब क्या हुआ, जब मेरे रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आने लग गए थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू डील विद इट। अब दो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो साथ में रह रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। So then we started learning few principles, then we started implementing, and then we found कि okay, life is so beautiful. We were just wasting our time in all these foolish arguments and everything. So once you learn all this, you implement it, automatically your life will become very more than beautiful. Try to be silent, don't argue, don't react. किसी ने आपको गधा बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो। करेक्ट। किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया तो योर सेल्फ एस्टीम शुड बी सो हाई कि आपको फर्क ही नहीं पड़े, आपको लगा कि ये गुस्से में है, ये बोल दिया है, अभी थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। नो पर्सन कैन बी इन अ वेरी हाई एनर्जी जोन ऑलवेज all the और time. अ वेरी लो एनर्जी जोन ऑलवेज। ये वेव फॉर्म में चलता है। अब इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में उस पर्सन का एंगर थोड़ा हाई है, यू कैन वेट कि ये नीचे आएगा, एवरीथिंग विल बी ओके। अब आपको लगेगा नहीं, यहाँ मुझे ये कैसे बोल दिया, आई विल फाइट, तुमने ये कैसे बोल दिया, तुमने वो कैसे बोल दिया। इट्स द रियल इशू। जहां पे बोला कुछ बकवास है, आपको यकीन थोड़ी करना है। किसी ने कुछ भी बोल दिया बट यू नो ना कि अब आप गधे तो हो नहीं, Yes. यू नो कि And ये जो all बोला था kinds of anger come from some kind of pain. So it's better if you understand कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज सता रही है जिसकी वजह से ये एंगर निकल के आ रहा है, rather than reacting एब्सोल्युटली, to it. एब्सोल्युटली करेक्ट। Yeah. So और भी चीजें होती है लाइक रिलेशनशिप में जो मैं देख रही हूँ कि आई हैव सीन अ लॉट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप। कुछ ऐसे हैं कि यार ये तो आइडियल है, ये पता नहीं कैसे हुआ, और कुछ ऐसे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाई आर दे इवन टुगेदर। सो व्हाट इज योर क्रक्स ऑफ अ रिलेशनशिप, कि क्या 3 or 4 पिलर्स होते हैं कि इफ दिस राइट इन रिलेशनशिप देन यस यू आर सॉर्टेड। ओके, फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड योर ओन वैल्यूज। तो 3 वैल्यूज का एक सिस्टम होता है, यू नीड टू फाइंड इट। आपको डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी का भी मिल जाएगा क्विज, तो यू कैन गो ऑन नेट एंड सर्च डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी, फ्री या एंड टेस्ट इट्स है। फ्री। या 3 कोर वैल्यूज। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड डिफाइन योर 3 कोर वैल्यूज। ओके, कि ये 3 चीजों के बिना मैं लाइफ पे नहीं जी सकता। जब आप अपना पार्टनर फाइंड करेंगे देन यू डिफाइन हिज और हर 3 कोर वैल्यूज। वो 3 वैल्यूज अगर अलाइन हो रहे हैं, यू विल बी एबल टू डील विद मैनी थिंग्स। वो 3 वैल्यूज अगर डिफाइन आपके आपस में नहीं हो रहे हैं, तो देयर वुड बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैशेस। अब क्या होता है, जब व्हेन वी मीट समवन न्यू, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से साइकोलॉजिकली वी बिकम थोड़ा नम्ब एंड हम वी गेट वेरी एक्साइटेड। तब तक हमको उस इंसान की कुछ भी बुराई दिखाई नहीं देती है। करेक्ट। बुराई नहीं होती, देर आर सम एस्पेक्ट्स इन एवरी पर्सन या जिसमें उनकी शॉर्ट कुछ कमिंग्स। आदतें हैं जो आपको अच्छी लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। अब आपको उस वक्त सिर्फ अच्छी अच्छी ही दिखती है, वाओ वाओ वाओ। फिर जब एक्चुअल में आपको उसके दूसरे हैबिट्स पता पड़ती है, तो आपको लगता है यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, डिफाइन योर 3 कोर वैल्यूज। सामने वाले की भी कोर वैल्यूज डिफाइन करो, मैच हो रही है, गो हेड। सेकंड, अब आप किसी रिलेशनशिप में हो और अब आपको लग रहा है कि भाई हमारी तो वैल्यूज मैच ही नहीं हो रही, अब क्या करें? करेक्ट ना, बहुत सिंपल सा बात है। जब भी आपको जो चाहिए होगा, लाइफ विल नॉट गिव इट, आई कैन गिव इट टू यू इन रिटर्न। जब तक कि आप उस लेवल पे, देखिए मैंने आई हैव स्टडीड इवन द हाईएस्ट ऑफ कोचेस, जो जिनकी खुद की पूरी बहुत बड़ी एकेडमीज हैं, दे आर द टॉप ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड, इवन दे हैव डाइवोर्सेस, बट उनके डाइवोर्सेस में दे आर एबल टू डील विद इट वेरी पीसफुली। दे आर यस। लाइक ओके, हम रिजोनेट नहीं कर रहे, थिंग्स आर नॉट वेयर वी वांट टू बी, सो वी शुड जस्ट स्टे अपार्ट। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, वी डोंट रीच दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी, तो वो फाइट में कन्वर्ट होता है। फाइट से क्या होता है, ईगो का क्लैश होता है, एंड देन इट बिकम्स समथिंग जो आपके लाइफ टाइम के लिए एक और पेन ऐड हो जाता है लाइफ में। यस ट्रू। बट इंस्टेड ऑफ दिस, देखिए, तो प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ से जाने नहीं वाले।
आप कितने भी बड़े कोच भी हो गए, आप कितने भी ब्रिलियंट भी हो गए, दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टू हैपन सम और द अदर वे। द थिंग इज आप उनसे डील कैसे करते हो। इवन इफ यू हैव अ पार्टनर राइट नाउ जिसकी आपकी कोर वैल्यूज डिफाइन नहीं हो रही है, नाउ यू कैन कम ऑन अ सिमिलर पॉइंट जहां पे आप दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हो। थोड़ा आप उनकी वैल्यूज की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा वो आपकी वैल्यूज की तरफ बढ़ेंगे, एंड देन यू विल क्रिएट अ करेक्ट पिरामिड। तो Hmm. इट वुड बी अ बैलेंस्ड लाइफ। बट देन Yes. अगर आप सामने वाले को खींच रहे हो कि तू मेरे वाले मान, दैट पर्सन इज सेइंग नो यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको ये पार्टनर की जगह कोई और भी मिल जाएगा ना, दीज थिंग्स विल कंटिन्यू टू हैपन। Yes, correct. क्योंकि आपका पैटर्न बन चुका यस यस। है। Awesome, beautifully explained. I loved it. Amazing. So first, thank you so much कि आपने इतनी सारी valuable insights provide किए on so many varied topics, and it was really fun to listen कि एक बहुत ही logical point of view है, पर ये बहुत relatable भी है. So thank you for that. Now we have reached to a point which I call a segment, which is keep it swift. So you are meant and known for your speed, your strength, your flexibility. So अब देखते हैं कि आपका mind कितने जल्दी react करता है to the questions. It's nothing tough, nothing too much. It's relatable to value itself. So shall we go ahead? या एब्सोल्युटली। Okay. So I think I know the answer to the first one, but what is your proudest accomplishment? Okay, to make my parents proud, when people came and told him that your son is doing a fantastic job, and he didn't even knew that I'm making videos. He was like, he came back to me, ki, what you are doing and everything. People are congratulating me everywhere. So, Wow. hmm. Okay. Last person you searched on Instagram. Okay, so it's a coach, Mike Chabot. He is also a manifestation coach, abundance coach. Yeah. Okay. What are your favorite exercises to do? Okay, I love skipping a lot. So skipping, and I love pull-ups and push-ups. I'm still trying to get good at pull-ups. Okay. Your books you would suggest that everyone should The greatest salesman in the world, one, and second is the A Walk to Remember. remember. Beautiful. What is your biggest fear? Fear is always there. Even when I am jumping into water from a great height, it's always there. But then you need to conquer it. And yeah, the biggest. So I don't have any fears right now, but I have conquered them all slowly. But there is always a fear whenever you start something new, whenever you will make your first sales call, whenever you will do your first video on, you will record your first video. Fear will always be there. You just need to do it anyway. Okay. Had you met yourself 5 years ago, what would you have said to yourself? Read lots of books. Read lots of books, and yeah, that's the only thing I would. And start doing some courses which are very valuable. Yes. Your biggest failure and what did you learn from Okay, the biggest failure is my communication. I was not able to communicate with my family what I actually wanted to do. And because of that single problem of communication, I faced lots and lots of issues in my life because I was not able to communicate what I want at any point of time. So, this is what I have started learning a lot. 3 habits that changed your life? Okay, so this is working out, meditation, and of course, these the morning success routine I follow, affirmations, visualization. Okay. What is your spirit animal? कौन सा ऐसा एनिमल जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते Lion. हैं? Okay. And 3 personalities that impacted you the most? Okay, so it's Dr. APJ Abdul Kalam. 3. Okay. And Okay, Dr. APJ Abdul Kalam, Swami Vivekananda, and Shri Narendra Modi ji. okay. Your favorite action hero? Because we are martial artists, so ये एक रहता ही है कि कोई ना कोई hero we do follow. Tom Cruise, Mission Impossible. Oh, okay. 3 destinations that you really like or that you would want to visit. Okay, so one is of course Kashmir. I would love to visit again. Then some Gokarna, some peaceful beach. But I would love to explore India first,
than going to the foreign, because it also helps us in gaining our economic momentum. Instead of going to the foreign countries, we should explore our own country a lot, so that our revenue gets increased. Third is Meghalaya, that's remaining. I will definitely visit there. Perfect. So, best compliment you have ever received? No, you look handsome. Okay. If a book was written about your life, क्या title देंगे आप? Okay, Supersonic said. Nice. And podcasts you listen to and recommend to the people? Okay, so I rarely listen to podcast, but yeah, I have my own podcast, Be Supersonic. So definitely you can listen to it. Mine But too. yes, definitely. Just So kidding. you can go with Mind Valley, where Vishen Lakhiani sir is there. And then there is Siddhartha sir. He is also doing awesome in the podcast space. And then there is any area that you want to improve in, particularly in either relationships or sales or marketing, then you can follow some top person there and start listening to him or her. Perfect. So prioritize or like rank health, relationships, career, money, spirituality. One, two, three, four, five. Okay, spirituality is the topmost. Second is relationships, and third is health. Then career, money. Yeah, money will follow automatically. If you have these things Yes. aligned, it will follow. Okay. Your favorite quality of yourself that you like the most. So, like, I am unstoppable. If I set myself to something, I will go and do it. I'm very fearless and very courageous. I'm very high risk taker. That's the risk taking ability I have. I love that about myself. Okay. Great. One key learning from your life so far. Okay, so just keep going. No matter what, even if life breaks you down, keep going, keep moving forward. Everything will be all right. And thank God every single day for whatever you have. Even if you are in the worst space right now, thank God that I am alive. I have 2 times of food. Whatever you have right now, you have clothes on your body, because there is some person in the same world who is not even having that, and he is aspiring to be where you are. So thank God for whatever you have. Brilliant. And one last message for the youth of India, for the youth of our country. Always focus on building the nation, how you can contribute to make this nation a strong, powerful, wealthy nation. Because if you are powerful, wealthy, the nation will also become wealthy and powerful. Help others become strong and powerful. Once you become, help your whole tribe, help people around you, uh, uplift them, help as many people as you can. How many tears you bring in people's eyes when you die, that's the only thing that will define your life, nothing else. Not how many Lamborghinis are parked in your garage, not which mansion you live in. How many people have tears in their eyes the day you go, that's the only thing that will define your life. And stop these drugs and everything, because if you are into all these, you will not be able to help build a very strong nation needs you. It needs you right now, and you are the most powerful asset of the nation. So go ahead and contribute. Wow. Amazing. So that was the end of our round Keep It Swift and the end of our podcast, which I thoroughly enjoyed. Thank you so much. क्योंकि एक एक चीज जो nuggets आपने दिए हैं, they are literally life transforming. So thank you so much for that. Even there are many things that has impacted me on an internal level, whether you say mindset or the relatability or the things that you should be implementing, but you're not. So thank you so much for each and everything. How was your experience? Thank you so much, Ayushi, for having me here. You are helping this community, whoever is your wonderful audience right now. By having me here, you are contributing yourself into making this world a very beautiful place. I really thank you with all my heart for doing this wonderful job. And I think youth will take an inspiration from you, and they will start contributing in their own ways. And this is how the focus should be same, to make our country a very powerful and strong one. Awesome. So my intention with this podcast is exactly that. The things you just mentioned and said through the podcast, कि हम उस level पे पहुंचे, become our best version, so we can help other people become their best.
So this is Okay. my only intention and target with the podcast. And you, all the guests who have been on the podcast or who will be there, you all are helping me achieve that in one way or the other. Even if it helps or changes one little fragment in anyone's life or mind. So yes, our work there is done, and we have done something valuable. So that's the crux and the intention of this podcast. So thank you so much helping me do it in such a wonderful way. And it's you all who are helping me get these thoughts across, because obviously the experiences that you have been through is what needs to be heard so that people can shorten their journey. क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ ओवरकम किया, कॉन्कर किया, तब जाके हम पहुंचे वहां जहां अभी है. But the people who are listening maybe 17, 16 or even younger or even 20s, they can fast track their journey through these learnings. So thank you so Absolutely. much for providing yours and giving your precious time, and looking forward to having lots of wonderful convos with you. Thank you, Ayushi. Thank you so much.